couple of comments that were made by Mr. Amitabh Kant's college mates, Shashi Tharoor and others. And there's been so much talk about India, that is Bharat, of course, but Bharat, that is India. And people say, you can't do away with India. It's too big a global, internationally recognized brand. What do you believe? Has the time come for Bharat to be, at some level, turned into a slogan to attract people from all across? And if you were given that responsibility, you've just been given the responsibility, of course, to manage the Bharatiya Janata Party's campaign. But if you were asked to evolve a campaign around Bharat, what were the ingredients? ये भारतीय जनता पार्टी आपने कहा, इसका नाम इंडियन जनता पार्टी कैसा लगता है आपको? See, the question is, what you call the nomenclature words is, what you feel is very important. Deep down, what you feel. What is the country you feel about? What is the ethos you feel? What it evokes? It's not only semantics. It's also, it's certain, you know, when your tongue moves in a certain way, and I think the experts will tell you there is a neurological path which it follows, and hence a certain imagery is evoked. So when you pronounce Bharat, a different imagery is evoked, and I think that's very, very personal and important imagery for me. So for any cost, I would never give up Bharat as a name, because it is deep down ingrained into what we believe the country is. It doesn't mean that India comes in parlance or you know, people refer to it in their local languages the way. I think that's a different sort of practice. Practice and emotion and belief. I think we need to understand the semantics of it from that. So it's not that you will shun things. In fact, I believe in assimilation. देखिए क्या होता है, आप भाषा की बात करते हैं. Now, you have a new word which comes, says SMS, which also means messaging. अगर SMS शब्द हिंदी की भाषा के शब्दकोश का हिस्सा बनता है तो मुझे बहुत खुशी होती है. बिकॉज अपनी बाहें आप फैला रहे हैं, अपना आकाश वृहत कर रहे हैं, यू आर मेकिंग योर स्काई लार्जर. लेकिन वो SMS शब्द अगर संदेश शब्द की हत्या करके आता है तो मुझे प्रॉब्लम है. आई हैव, जहां पे संदेश से आएंगे वहां संदेश से ही आएंगे, वो आप रिप्लेस नहीं कर सकते. So I think this coexistence, I think this assimilation is how I think about it, because it evokes a certain feeling, and those feelings are important. शब्द जो है वो संस्कृति का कैप्सूल है. जब एक शब्द मरता है तो उसके साथ उसकी संस्कृति जुड़ी हुई मरती है. ये आपको सारे linguistics बता देंगे. Even a particular word dies, how many emotions and how many feelings and how much of knowledge, information dies with it. Because it is a capsule of that culture. So I think we have to make sure that, you know, we inject and infuse life in words. और जो गायब भी हो रहे हैं उनको वापस लाए. That is what my approach is. So it's a complex subject. What should take precedence? I think it should be left to people to finally see what they feel. I think their feeling is more important. I think the names belong to them. The language belongs to people who practice it. Let me draw you into this, because Amitabh Kant, speaking in tangible terms, the emphasis today is around projecting our nation as a fast, modernizing, innovative country amongst the comity of nations. And many people are using the term Viksit. The Prime Minister himself uses it. It sort of gives us a feeling of, as he says, energy. But Bharat invokes a sense of earthy nostalgia. At least that's what a batchmate of yours in college, Piyush Pandey, another brand guru, has said. So how do we contemporize brand Bharat? So, you know, मेरे विचार से जो हमने अचीव किया है, you know, infrastructure में, digitization में, climate change में, structural reforms में, जो कुछ अचीव किया है पिछले 8-9 सालों से. So there's a great sense of national pride. Huge sense of, so the vestiges of colonialism have gone away. We are not aping the West anymore. We are going back to our roots. That's very clear. That we want to be a modern, progressive nation based on our own strength, on our own civilization. And I think
Bharat gives you that strength that we are a strong nation, and that Bharat, the time is now. It has to be ambitious, it has to be aggressive, it has to be aspirational. That is what the message goes out. So let me ask you, because Mr. Kant, people in the opposition say that the NDA's obsession with this concept, Bharat, is essentially about a political messaging to its core base. It imagines a Rashtra with sort of Hindu sensibilities and characteristics. Now, how do you respond to that? It's also very forward-looking. It's also very progressive. It's also very modern. When you open up, you're opening up your space sector, you're opening up your drone sector, you're opening up your robotics sector, you're doing, the startups have grown by leaps and bounds by 20x, in the number of incubators have grown by 15x. Your economy is growing at 8.5% for the last 3 quarters at a time when there is a global slowdown. So all this also reflects the confidence of a young, vibrant India, of a very dynamic young India. The average age is just 29. Why should we be caught up in just looking at what the West's perspective on India is? We are confident that we are a Bharat. Prasunji, let me ask you this. But इसमें मैं एक चीज़ जोड़ूंगा कि progress and what people feel, everything aside, what is authentic is what I am interested in. And Bharat is authentic. India is not. See, authenticity, now you say politicization. Politicization versus political ideology. Now, if there is an ideology which is true to itself, where it emanates from, and it chooses to use those metaphors and those, what's wrong in it? It's honesty, it's transparency. I don't consider this, debate when it gets polarized. I think I personally have, माँ को मैं माँ के ही नाम से बुलाता हूँ, okay? और आप जिस नाम से सहज हैं, वो आपका नाम है, और मैं भारत से सहज हूँ. इंडिया के लिए तो incredible use किया जाता है. They've used the term incredible. So I just wanted to ask you this, because what would be a tagline for Bharat, for example, that will resonate across? You already have Incredible India, which is in its own sense so alluring. So Incredible was a tourism brand, is a tourism brand for India, which we started when Mr. Vajpayee was the Prime Minister of India. And it was meant to promote India as a tourism destination. But here you're talking about brand building of a country. And, branding works best when you differentiate itself and you go back to your own, you differentiate in terms of your own inherent strength. And your inherent strength means your ancient civilization. There has to be a sense of pride on what you are achieving right now. And to my mind, it's also about encapsulating all that you have achieved in terms of many, many aspects of your growth, from infrastructure to climate change to digitization, the quantum leap that we have made. And to my mind, that's about Bharat. The time is now. It's now to really leapfrog. So let me ask you this. What would be an effective slogan which at some level gives you this sense of genuine authenticity? Yes, what would you come up with? On this spot, I think you were asking me for slogan earlier also. So I'm saying मुझे ऐसे ही दिमाग में जो आता है अभी, गूंज रहा है भारत. और इसको मैं, I can see a campaign there, like यहाँ से जो टूरिस्ट आ रहा है वो भी कह रहा है मुझ में गूंज रहा है भारत. और आप विश्व स्तर पर देखें और देश के देखें, गूंज रहा है भारत. भारत का प्रताप, भारत की प्रतिष्ठा, भारत का सम्मान, भारत की everything about our country, it's resonating, reverberating. I feel right now, if you ask me instantly, I mean, this is an exercise which we normally sort of, that's a profession, you're asking it to do for free. Well, someone is paying you now, I believe. Someone is paying you. BJP is going to pay you for that's obviously building their political strategy. So how is that? Of course, when it happens, and we are looking forward to the challenge. I think there are some fabulous people out there,
who are in the committee and in the organization. Great minds, I would say, BJP has. And I think it will be immensely a learning exercise for me personally as well, has always been. And I think work is a way of our engaging with life. I think we look forward to the challenge. Well, it's very interesting that you've got this assignment at a time when many people say that BJP doesn't represent everyone in this country. It only represents a very few bunch of people who are allied to a particular kind of exclusivist idea of India, etc., etc. So how are you going to broad base the BJP's appeal? आप लगता है एक किनारा लेके बैठे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। I mean, लेश मात्र भी नहीं लगता कि जब आप भारत कहते हैं तब भी नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये भारत का डिबेट जो है आप बढ़ाना चाहे तो बढ़ाते रहे, लेकिन अगर आप समझें तो उसकी आत्मा में आपको समझ में आ जाता है कि भाई एक संस्कृति होती है, देश की आत्मा होती है, और वो संस्कृति को हम जन्म देते हैं, हमारे हाथों से बनती है, उसमें जो भी है वो सब हमारा है। तो उसमें किसको कहाँ पर यूज़ करना है, उसकी भारत कहाँ कह रहे हैं आप, इंडिया कहाँ कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, वो इनक्रेडिबल इंडिया कहेंगे, इनक्रेडिबल। आई थिंक ये जैसे जैसे इवॉल्व होता है ऐसे ऐसे लोगों के थॉट्स क्लियर होते हैं। रही बात की पार्टी किसकी है, आई थिंक आई वुड से एनीबडी हु इज ऑपरेटिंग एज अ पार्टी वुड लाइक टू बी, एंड आई थिंक मैं समझता हूँ बीजेपी सबकी पार्टी है। I think they're trying to, and look at our Prime Minister, he tries to reach out to everyone. I was with him with the youngsters at the Creators Award, Young Creators, Content Creators Award. And I could see that young 17-year, 20-year, 25-year-old boys and girls, how they were sort of from across the country, who are not, they don't have knowledge of politics that much, but how they were gravitating towards it. I think intent is there. Now how far people have gone, how much road to cover, you can talk about those things. You can't be illusionary about those things. But intent of BJP is to be a party of everyone in this country. In fact, they have global ambitions. मैं इसलिए भारतीयता को मानता हूँ, देखिए, भारतीयता के मूल में हमने G20 में, मेरा सौभाग्य रहा कि इनके जैसे माइंड के साथ मैंने काम किया G20 में। आई डिड द ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग एंड कैंपेन विद हिम, ही वाज लीडिंग इट। नाउ इफ यू सी, हमने वहां पे कहा वसुधैव कुटुंबकम। इन टूरिज्म टुडे, आई थिंक दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट टू अंडरस्टैंड हमने क्या किया, वी हैव जस्ट रीइंफोर्स्ड व्हाट इंडिया पीपल वांटेड टू बिलीव इंडिया इज, कि यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं, बड़े मसाले हैं, नाच गाना है, और उसी को रीइंफोर्स हम काफी वक्त तक करते रहे। वेल, सम ऑफ दैट इज नॉट रॉन्ग। The truth is, it's not deep diving into Indian ethos. When we say diversity, it looks like the way people are talking about diversity and inclusion in the world, India is also talking about diversity and inclusion in the world. But is it the truth? The truth is, when we say Vasudhaiva Kutumbakam, when we say Ekam Sat Vipraha Bahuda Vadanti, or we go to Syadvad or Anekantvad, now ये सब चीजें हमारे एंशिएंट इथोस हैं। नाउ पीपल विल से व्हाई आर यू गोइंग टू एंशिएंट, अरे भाई वही तो आपको डिफरेंशिएट करता है, वरना एवरीबडी थिंक्स लाइक इट्स अ फैशन टू टॉक अबाउट इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी। इंडिया इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इट, इंडिया इज नॉट टॉकिंग अबाउट इट, इंडिया हैज प्रैक्टिस्ड इट। नाउ हाउ डज इट हेल्प ब्रांड इंडिया? It does help brand India because it makes it ahead of everyone, and it says that before you even it crossed your mind, this civilization was practicing it. I take a lot of pride in it. Whenever I go in different other countries, I make it a point, I say that. Another point which he made a point to say in G20 was mother of democracy. Now democracy, I think our Honorable Prime Minister had played a lot of emphasis to that. That people should know that democracy is not a newfound thought for India. It has been part of the ethos of this country. Another thing, sustainability. You look at sustainability, you say sustainable development. And मैं pride के साथ, बहुत गर्व के साथ ये कहता हूँ कि I come from a country जहाँ पर we never talk about human civilization, human thing. Keeping human at the center is not what we do. That we are humans and everything else is for our consumption. That is not the way India thinks. India thinks about Srishti. Srishti means all creation.
There is a rhythm to the creation. So I am one of the part of the creation, hence it is not for my consumption. And what it does, that it creates sustainability on its own. And then sustainable development, sustainability comes like an afterthought. Like you say, sustainable development. The sustainability has come as an afterthought. But for India, development has to begin with sustainability because we believe in Srishti and creation and one with it. That's why we cannot harm something for our progress. Now, is it a modern thought or is it a thought which is part of the ethos of the country? And if somebody says it's part of the ethos of the country, you call them parochial, you call them the fact that they are, becoming inward looking. I think that is injustice and unfair. Well, Mr. Kant, obviously there has been a moment in time where we are deciding to make this pivot, but the experience has been thus far that Bharat was sort of tucked away a little bit, not for show, so to speak. You're now taking Bharat in, but we still sort of live with Make in India, Make in Bharat, Make in India, Made in India, etc. Ubharta Bharat, Made in India, how does that sound? नहीं, इन्होंने कहा कि भारत गूंज रहा है. मेरे विचार से भारत गूंज रहा है, पर भारत छलांग भी लगा रहा है, क्योंकि अगर आप हार्ड पावर देखें और सॉफ्ट पावर दोनों देखें ब्रांडिंग में, तो सॉफ्ट पावर में आप अपने एंशिएंट सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ पे जाते हैं, जो हमने वसुदेव कुटुंबकम के बारे में बात की G20 में, और सबको लगा, सारे देशों को लगा कि ये भारत को डिफ्रेंशिएट करता है, क्योंकि आपके पॉलिटिकल ओपिनियंस डिफरेंट हों, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज डिफरेंट हों, पर एज ह्यूमन बीइंग्स हम सब एक कॉस्मोस से आते हैं. और दूसरी चीज़ जो सबको लगी कि सब में एक कंसेंसस बनना ज़रूरी है, तो ग्रोथ का इश्यू हो या ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट हो या विमेन लेड डेवलपमेंट पैक्ट हो, इसमें चाइना, सऊदी अरेबिया सब ने कंसेंसस अचीव की. और इंडिया ने ये दिखाया कि हम इमर्जिंग मार्केट्स, G7, रशिया, चाइना सबको एक साथ एक जगह ला सकते हैं. दूसरा, सबने भारत की लीडरशिप मानी कि हम प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में हम एक कंसेंसस हर इशू पर ला सकते हैं. वो केवल भारत ला सकता था. तो ये भारत का एक बहुत बड़ा एक सॉफ्ट पावर की विजय रही और एक हार्ड पावर की विजय ये रही कि भारत ने सबने माना कि भारत इस समय बहुत जोरों की तरक्की कर रहा है. देखिए, हम इस समय डिजिटाइजेशन पे नंबर 1 है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे नंबर 1 है, हम ग्रोथ पे नंबर 1 है. दुनिया की जितनी ग्रोथ हो रही है उसकी 20% ग्रोथ भारत से आ रही है. तो यही एक समय है कि आप अपनी पूरी ब्रांडिंग, ये समय है भारत का, और ये समय फिर कभी नहीं आएगा. तो इस समय एक आपकी एस्पिरेशन है, आपकी एम्बिशन है, आपकी एनर्जी है, आपकी वाइब्रेंसी, आपकी डायनेमिज्म है, वो सब कैप्चर इनको करनी है इस समय. Well, as long as it's not just a topical change, as in you rebrand, but the reality must also change. So that's what you're trying to say. मैं ये कह रहा हूँ कि इस समय एक, क्योंकि हमने बहुत अचीव किया है, और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने कहा कि जो आपने 9 वर्षों में किया वो भारत को 50 वर्ष लगते अचीव करने में. Right. तो एक सेंस ऑफ नेशनल प्राइड है. अभी हमारा जो, हम हमेशा कॉलोनियलिज्म थिंकिंग में फंसे रहते थे, हम हमेशा वेस्ट को एप करते थे, हम वो अब हमारे दिमाग से निकल गया है. ये समझना बहुत जरूरी है. Thank you very much, gentlemen. It's been very enlightening. कि वो है कि देखिए, ये हीन भावना जो है ना, जो आप कह रहे हैं, ये हम सबसे जानने की आवश्यकता है. Even if you want to make brand India, you want to talk about the India doing well, it's very important कि हमारा सेल्फ बिलीफ खत्म नहीं हो. क्योंकि आप ये देखते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे देश में कमियां ही कमियां हैं. भाई, झील में पत्थर ही पत्थर हैं, झील भूल चुकी है झील होना. झील में पत्थर ही पत्थर हैं, झील भूल चुकी है झील होना. अब कहाँ बची गौरैया की फुरफुर, हर कोई चाहता है चील होना. तो आप भारत को अटैक करना चाहते हैं और अपनी कमियों को उजागर करना चाहते हैं. ये लोगों से मैं ये कह रहा हूँ, जो लोग भारत की कमियों को अक्सर आगे रखते हैं, सेल्फ बिलीफ जो है
That's वो बहुत ही ज़रूरी है कि हमें ये एहसास करा दिया गया कॉलोनियल पास्ट में कि हमें कुछ भी अच्छा नहीं है। ये कैसे हो रहा है? लोग एयरलाइन में आज ट्रैवल कर रहे हैं, अरे कैसे कैसे लोग एयरलाइन में आ रहे हैं? एक तो टैगलाइन ये रिजेंटमेंट कहाँ से भाई? कैसे कैसे लोग हैं? आपके ही तो लोग हैं। ये कैसे कैसे लोग एयरलाइन में आने लगे हैं? ये कैसे हम कह सकते हैं अपने लोगों के लिए? ये हम ये पहले रिजेंटमेंट भी जो प्रिविलेज क्लास में है ये भी खत्म होना चाहिए कि भाई हमारे ही लोग हैं, जब तक ये तरक्की नहीं करेंगे आप तरक्की कैसे करेंगे? Okay, well, very passionate about Bharat. Believe in Bharat. That's your tagline, perhaps. Thank you very much, gentlemen. Thank you very much for being here. Thank you once again, Mr. Prasoon Joshi, Mr. Amitabh Kant. Thanks, Rahul. Thank you. Ladies and gentlemen, just one request. Kindly remain seated for all of the sessions. We do understand that there's a very strict security protocol. That's because the Home Minister and the Prime Minister will be gracing us with their presence. So we request each one of you to kindly remain seated as we continue with the day's events. Thank you so much. Well, we just heard Mr. Prasoon Joshi talking about Vasudhaiva Kutumbakam. That's so strongly rooted in India's civilization. It has been, in fact, a guiding light for the Indian family system as well. What does it mean? It's the world is one family, which has been also underlined by the Prime Minister Narendra Modi and showcases India's commitment towards the global community as well. India successfully recently hosted the G20 summit, as I said before, as well as the Shanghai Cooperation Organization, or the SCO summit last year. Now, from the quadrilateral security dialogue to Quad to BRICS, India holds a long list of such strategic membership. Well, the Prime Minister's mother of democracy description also echoes India's profound and ancient democratic foundation. Ladies and gentlemen, let's hear it from the man who has been shepherding all of this with such elan and grace. Please join me as I welcome Dr. S. Jaishankar, Minister of External Affairs, for a session that's titled India's Moment in Conversation with News 18's Zaka Jacob. Welcome, Mr. Jaishankar. Nice to have you with us. Thank you, Zaka. Dr. Jaishankar, thank you very much for joining us here at Rising Bharat. So we were having this discussion outside and internally in the run-up to Rising Bharat as well. In an election year, forget about election year, we are a few weeks away from elections. What do we ask the foreign minister? Is foreign policy top of mind of people during elections? You would think that more tangible things like homes and toilets, etc., are the things that people are more concerned about during election time. But funnily enough, Minister, in the News 18 opinion poll that we had last week, one of the things that people said, one of the reasons why they will vote for Modi is because Modi ne desh ka naam roshan kiya hai. Modi has elevated the image of India substantially. Why do you think something that is not necessarily tangible, like foreign policy and foreign policy gains, has suddenly become a vote-determining issue? Well, first of all, let me say what a pleasure it is to be here with all of you. Look, to be honest, that answer doesn't surprise me. It doesn't surprise me because in the last 5 years, traveling around the country, I've seen this sentiment grow. And I attribute it to 2-3 factors. One, that there is a greater sense of pride in the nation about itself, you know. And also, as people's basic necessities are being met, they are also looking at many more things, you know. So they know today, for example, that the water connection will come, the electricity will come, the road will come, the health will happen, because they have seen that grow. So they're also, there's a kind of I would say, a neo middle class thinking which is pervading through the society. The second is that you know, a lot of people today go out to work, go out on travel. They are tourists of various kinds. Something abroad in some way affects their livelihood. So the connection between being treated well abroad, being looked at well abroad, and their existence is also stronger.
I would say the third factor would be, to me, the G20. G20. G20 actually ended up our initial concern, and Amitabh is here, initial concern was how do we get it out of Delhi. But we actually ended up with the entire country owning the G20. That in very small towns, I mean, people you would not think would have an interest in foreign policy, leave alone something as specific as G20. Actually, people had that sense, it's our G20, it's a time to show our country to the world, people are coming. So I think G20 has had a great sense of connection. And finally, in a very peculiar way, COVID. That what COVID did was, at different times, it's made us aware, after all, the COVID came from outside. We sent vaccines outside. At a critical moment, we got oxygen from outside. So somewhere that connect with the world, it's made people more aware. Then it's technology. You have the world in the palm of your phone. So I do want to ask you about the G20 part, because we have seen instances in the past where major sporting events have transformed the image of a nation, whether it is the Barcelona Olympics, the Beijing Olympics, and so on. But the G20, the uncharitable way of putting it is it's a talk shop. Why would that have permeated to the level of the Aam Aadmi and our Aam Aurat on the street in a way that it's lifted the image of India? Partly, as I said, physically, because it was done in 60 cities and towns. And mind you, other than those 60 places where something happened, people went out maybe to another 60 or 100 places more. So if you actually said in terms of locations, I would say maybe 120 to 150 locations in some way or the other saw G20. And we ran G20 actually like an Andolan, like a Jan Bhagidari. So I mean, look, I've been doing G20 for 10 years now. This is the only G20 where you went to a place, you had a meeting, but there's a university running an event on a G20, there were a bunch of NGOs who were doing something on a G20, the population was out there displaying their culture. So it had a flair and a impact which was very, very different. So the second is, to be very honest, I don't think people expected us to succeed. Really? Yeah, I mean, look, we went through, I saw the Indonesian presidency, the kind of pressures they were in. Every meeting was blocked by a single issue. And then finally, okay, we patched something together at the summit. All of us helped out because that's the way it is. Now, in our case, I think we took, frankly, much less defensive strategy. We said, look, every meeting, if there's a finance meeting, we will get a finance outcome. If you've got other issues, I'll put an asterisk and put it on the side, but you are not going to block that finance outcome. So what we did was, we piled up the stakes, outcome after outcome. So you said it's a talk shop. Yes, you are right, but even talk shops make a difference. So when a talk shop, for example, ends up recommending to the World Bank that you need to change, reform as per a report which is coming out, or a talk shop says that digital public infrastructure is today a kosher concept and the rest of the world must adopt it for propagation. Don't write off the power of ideas and talking. Ultimately, they move things. And I would say, if you look at one thing which has gone very badly wrong with the world, which is that COVID, the impact of COVID has really set back development, SDG targets in the world. The G20 brought the focus back. So, and people intuitively understand it, that people, they may not know the nuances, but they knew the pressures were on us, and they knew that we had to,
get the outcome done at the summit, and I think they kind of get it. So, because this is election season, as they say, you have to go to the voters, give them your hisab of what you have achieved over the last 5 years. So, in the realm of foreign policy, because you've been shepherding it, you've been marshalling for India's foreign policy over the last 5 years, aside of the G20, the COVID vaccines, navigating India's interests through these two wars, what is the one thing that you would say is the standout for the Modi government, which no other government in the realm of foreign policy has done in the last 75 years? Well, look, if, it's not an if, it is a when. When I go out and explain foreign policy of the last 10 years to people, I would actually tell them Modi ki guarantee works as much abroad as it does in the country. Okay. And it is Modi ki guarantee which moved the whole Indian system in Operation Ganga, where 5 ministers were deputed and told you sort out those places and come back when the last people come back, when the military is put to work on a mission like this. It could be that, it could be Operation Kaveri in Sudan, it could be what we did during COVID, the whole Vande Bharat mission, that anybody who was stuck somewhere, I mean, there were shipping crews, there were air crews, there were hotel people, there were tourists, there were students who had been told your hostel is closed, go home. So what has happened today? And it isn't just the people who came back. If you looked at the Gulf, where we have today almost 90 lakh people, my deputy Muralidharan and I were regularly going to Gulf during the COVID because we were carrying messages from PM to the Gulf regime saying, please take care of our people. And they did respond. They did take care of them. So, and it could be, it need not be just taking care in a physical sense. The Modi ki guarantee also applies that I will take the right decision to make sure your petrol costs are kept within reasonable grounds by not bowing to political pressure. So that sense that, we have a national interest, the national interest will and national welfare in a way. We will do what it takes. We will send troops in the height of COVID to defend our northern borders. We will react to terrorism in a way in which will deter, any sort of repetition of such attacks. So it works in different ways. I think today, when part of the reason why people respond to foreign policy is they can see that visibly our international stock, our credibility, our weight, our influence has gone up. So, just like the government puts its record to the people and says, these are the things that we've achieved in the last 5 years, 10 years, the opposition also has a right to say that, look, this we think are the failures of the government when it comes to foreign policy. So they say, look at the whole situation vis-a-vis China. You mentioned that. The opposition's even gone to the extent of saying you've lost territory to China. Look at the neighborhood. Even friendly countries are not so friendly anymore. The situation with Pakistan is back in the back burner. With the West, there are serious differences on the Russia-Ukraine war, on the Israel-Hamas war. What would you say to that? What would you say to the opposition's narrative? Well, I would say, some of the places which, by the way, they said we had lost, were lost in 1962, if not before. So I'd say first go and get a lesson in history, possibly in geography. The second, we may have, differences with the West on Ukraine. But the purpose of foreign policy is not to agree with other powers on the basis of their interest. The purpose of foreign policy is to defend your interest and advance it. So if I have a difference, I have a difference. So what would the opposition like me to do? To get along with people and increase my petrol purchase, price at which I buy fuel? So, I mean, let's get the parameter of judgment right. I still say that if you look, or take Pakistan, yes, today our relations are very, at a formal level, are very minimal. But why has it happened? It has happened for two reasons. One, because we have put terrorism fair square at the center of the relationship.
And number two, the Pakistanis reacted to our long, in my view, a long awaited, something which should have been done much earlier, decision on 370. So what would the opposition want us to do? Not do 370 because it will upset Pakistan? Or talk to Pakistan ignoring that they do terrorism? Actually, that's what the opposition was doing. So if you ask me, look, foreign policy is not run as a global popularity exercise. It is run I mean, if you have an appeasement mentality at home, you will take it outside. So one of the points you mentioned, and again, this is the latest sort of criticism against your government, points of difference, if you will, with the West, is on the CAA, the Citizenship Amendment Act. The US State Department has reacted to it. I think the MEA has also put out a formal statement against it. When you speak to your Western counterparts, how do you tell them that this is not a discriminatory law, that people are not being discriminated basis their religion? Well, actually, it isn't when you speak. I have spoken. When CAA was passed, I did speak. Even now, I continue speaking. And there were 2 points I made. I actually, I had a meeting with all our European colleagues, EU colleagues. I'd gone to Brussels at that time. And I asked each one of them to look at the citizenship pathways which they have in their respective countries. And can you tell me that there is no criteria by which you will fast track a certain category? Every one of them has something. It could be religion, it could be historical, it could be language, it could be ethnicity. The fact is, and the US, I'm on record as giving multiple examples of that. So look, do understand, this is an issue of correcting a certain situation of our history. And it is a question of being just, of being fair to those people who were caught on the wrong side of history at the time when partition happened. And who at that time, whose welfare people worried about even then. So, and as I said, this is not unique. I mean, if you go around the world, in different parts of the world, history has stranded people in different situations. Now, you can either be completely heartless and utterly calculating and say, well, it doesn't matter, who cares what happens. But if you look at the predicament of these people, these are stateless people who are stateless because of no fault of theirs, because political leaders of a certain era got it wrong. Somebody is righting a wrong. They are not wronging anybody. They are actually righting a situation where a wrong has been done to many people. You mentioned, not in a direct way, but in a tangential way about this in your book as well, Why Bharat Matters, as to why you believe, and you've made a case for it, it's for up to people to agree or disagree with it, that because of that mentality that you referred to in the first few decades after independence, there were missed foreign policy opportunities, particularly vis-a-vis Pakistan and vis-a-vis China. And vis-a-vis the US. And vis-a-vis the US as well. So, but some would say, now you have the benefit of hindsight to make that argument, to make that case. Perhaps in the 50s and 60s, that case would have been looked down upon or may not have been entertained. So, how do you then make the case that, these were missed goals or missed opportunities because there was a certain political bent of mind? I saw that argument coming, and therefore I anticipated it. So, a good batsman. So let me tell you. I mean, first of all, I just want you to think of this one very simple fact. You got Pakistan wrong, you got China wrong, you got US right, and we had a great foreign policy. So put that aside. I am not saying today, benefit of 2024, that, let's look back at 1954 or 1950.
I'm saying somebody in 1948, 49, 50, 51, 52, as you were taking those decisions, stood up and said, you know, please, Mr. Nehru, what you are doing, have you looked at this aspect of it? So this is not hindsight. These are Nehru's contemporaries who are questioning decisions which Nehru was taking at that point of time. So what are these decisions? I give you three. Shyama Prasad Mukherjee actually contests very strongly the Nehru-Liaquat Pact, saying, look, you are assuming that Pakistan is going to treat its minorities the same way as we are treating our minorities. But the very nature of creation of Pakistan and the regime which has come into being is very different. So how can you possibly make, you know, such a fundamental misreading of these guys? And mind you, this is just 3 years after partition. Okay, well, a little bit more. The Patel, I'm giving you an example of China. You know, Patel puts in writing that today, for the first time, we are facing a two-front situation. The intentions of China cannot be taken in a positive way. You know, there is much that we have to apprehend. So please do not, you know, have a sort of rosy picture of the situation. What is the answer from Nehru? You know, I cannot conceive that anybody would undertake a wild adventure across the Himalayas. By the way, that's exactly what they did in 1962. So now, if Jaishankar in 2024 says, oh, they got it wrong in 1954, your question is very, very valid. It's not Jaishankar who's saying it. It's Patel saying it on China. It is Shyama Prasad Mukherjee saying it on Pakistan. It is B.R. Ambedkar who says, look, why are you alienating the Americans? If you are to argue, you want to take on the American, I have no problem with it. I just told you foreign policy can be pushed back. At least fight your own cause. We were alienating the Americans on behalf of China. That we were taking up China's cause. And more than anything else, I mean, what an irony. That imagine, in 1950s, we spoilt our relationship with America because we were arguing on behalf of China. So this is not hindsight. This is not a, you know, a political polemic. I am placing before, especially the younger generations, because they wouldn't be familiar with it. I am placing historical situations, which is what I called a road not taken. That road was available. That road was marked. Those people drew a map and said, don't go this way, go that way. And we consciously chose not to take those roads. Now, I'm not saying there were no brainers. I mean, there were pluses and minuses. But we need to get out of this, you know, cult worship that everything from 1946 till pick your year, you know, these were great years and we did splendidly. If anything went wrong, other people were to blame. But, you know, Nehru's foreign policy is such a sort of impeccable theology that even today, whoever comes to power must follow it. And any deviation is somewhere wrong. I think, you know, companies are audited. After all, countries should also be audited, for policies should be audited. People should look at what happened in the past with an open mind, with a critical mind. And by the way, I'm not saying it should only happen then. I'd be very happy if somebody said, you know, I'd like to discuss the last 10 years with you. In fact, that's exactly what you're doing. And please defend your record. I'd be very happy to defend it. So let's talk about one big aspect of that record. And since you referred to in the previous answer about a two-front situation, are we not in a two-front situation today? We have, my friend, we have always been. I mean, it is we who were in denial. I mean, tell me, I'm now asking you as a person, Zaka, at which stage in your life did you actually feel that China was your strategic partner? I don't think in my lifetime. No, but yet in 2006, we actually have a declaration describing China as a strategic partner. So
I want to say, look, there's a gut sense in society. Sometimes, and I say this as someone from the foreign policy fraternity, sometimes, this is a bubble you have created. Because in the earlier years, it was very much a Nehruvian ideological bubble. Nehru was against America, so everybody was against America. Nehru said China is a great friend, everybody says China is a great friend. So the vestiges of that continue, even today. I mean, you have a concept called Chindia. Okay, I don't, many of you will remember who put that concept forward. So if you actually have reached to think that you're making a sandhi of China and India, and you think we are that close, and our interests are so aligned, I mean, this is a different world. So I would put to you, if you go back, especially I would say to me, 1950s, it was latent. 1960s onwards, especially after the China-Pakistan agreement in 63, and the territorial transfer of Indian territory by one illegal occupier to another, you had effectively the two of them working in tandem. And to me, that is a very obvious basis on which to build policy. So let me now come to domestic politics. We've got the last 15, 16 minutes now. In the last 5 years, we have seen the transformation of Dr. Jaishankar from diplomat to foreign policy scholar. Now you're a full-blooded politician. So tell us, why is the Prime Minister spending so much time in southern India? Every day, every other day, he's in South India. In the last elections, in the last Lok Sabha elections, out of 129 seats in the 5 states in southern India, the BJP won just 29. A bulk of it came from Karnataka. Why do you in the BJP believe this time the south will be your new frontier and you'll be able to conquer the new frontier? Well, if I applied that logic, I could apply it to the rest of the country. There was a time, there were many states where there were no BJP MPs. So, in a way, every state, I mean, for a party like BJP, was a new frontier at some point. Why today, I mean, I don't know how many of you saw the pictures of the Prime Minister's road shows in Coimbatore and Palagat, etc. Look at the response that he's getting. So, my sense is, I mean, ultimately the results will tell. But as someone who's been traveling a fair amount, certainly to Kerala, I mean, Karnataka is a different case. There's already a strong history with BJP out there. My sense is, political opinion in those states is changing. That people today contrast, they've seen the benefits of good governance, that many of the changes of the last decade, as you say, the Anna Yojana, the food support, the Mudra scheme, the Awas Yojana for the housing, even what the vendors, informal economy is getting, Swanidhi, the Jal Jeevan mission, the power connection, the road building. So when the Kisan Samman Nidhi so if you put all this together, they today realize, and particularly if you add to this health and insurance, they today realize that, look, because you are getting good governance out of the center, and these schemes have been pushed by the center, they have benefited literally tens of crores of people. They are looking, at a very, very different way, both at the center and at the BJP. The second, I would say, our sense of ourselves as a nation and society is also changing. There is today, I mean, you refer to it in a very different way, saying, why are people taking an interest in foreign policy? Yeah. I would argue one of the reasons they are taking an interest in foreign policy is they have a stronger sense of what this nation is about.
And the South is, as deeply, if not more so, that sentiment as the rest of the country. And I think the combination of all these things is actually, it's certainly, anybody would, even anybody objective would tell you something is changing out there. You can see that, you can feel that. Now, we'll have to see how it goes, but I can tell you there's a fair degree of confidence about how this will work out electorally. You mentioned about the sense of identity, sense of pride. No doubt it's gone up in the last 5-10 years, but in the South there's also regional identity. And one of the narratives, you can call it a trope if you want, particularly from the southern parties, is that your party is anti-South India, you're a North Indian party, you're a Hindu, Hindi imposition party. As somebody who is a Delhi boy, but your family is from the southern part of this country, how would you counter that narrative? Well, look, I think by now Prime Minister Modi has put that kind of propaganda to rest. He's contested it very, very effectively. But you have not had a Prime Minister of this country who has so visibly associated anything national with what you would call regional issues. I mean, it could be, the fact that we've taken foreign policy out there, the fact, I mean, even the parliament, the Single issue, the fact he did Kashi Tamil Sangamam, or in fact also, a Tamil Saurashtra. So he's taken enormous pains to actually counter that kind of propaganda which has vitiated our politics for many, many decades. And my sense is today you're getting that traction. My next question is in two parts. First part I know you'll dodge, but I'm still going to ask. But the second part is a little more weighty. The first part is, are you contesting the upcoming Lok Sabha election? Second part? The second part is, does it make a difference in your, practicing of foreign policy if you're an elected politician as opposed to one who is nominated to the Rajya Sabha? It's a hard one because if you look at the previous foreign ministers of India, you've had a mix. Many, I mean, my immediate predecessor, Sushma ji, was from Lok Sabha, and many of her predecessors. So it's a mixed issue. The fact is, today, certainly speaking from a BJP perspective, I can tell you how much focus there is on constituency, on ensuring delivery, on making sure that last mile, that leave no one behind message goes through. So when I look at my, I'm a parliamentarian of 5 years juniority. So I'm still a relatively new person, and therefore I'm very curious how does that peer group work. And I look at especially the effort which Lok Sabha MPs put in, and it's staggering. I mean, it's not, by the way, that the Rajya Sabha MPs have a ball. I mean, because certainly where the BJP is concerned, I mean, you have governance responsibilities, you have party responsibilities. I mean, you are on, really it's a 365-day kind of calendar. But there's always that balancing your focus and attention with what are foreign policy issues, with other responsibilities that you may have. It may be Lok Sabha, it may be something else as well. You've had ministers who were not Lok Sabha members, but who as foreign ministers had many other responsibilities to do. So you're not answering the first part? No. No. No, but since you said that the BJP gave so much attention to constituencies, is there a preferred constituency that you would like to fight from if the party asks you to? No, I think when I said I wasn't answering the first part,
bowling a googly still doesn't mean the ball is going to be played. Okay, let's run you through the last 5 minutes of questions. It's a bit of a rapid fire, if you will. One foreign policy person that you have been inspired by in your career, both as a diplomat and now as a politician. Well, look, what happens if you pick somebody, I mean, I have some, if I look at the peer group of ministers, you know, there would be there are people for whom you have genuine respect. The problem when you get into names is you name somebody and you don't name many others. But over a period of time, I would say, you know, there have been people who, from their sort of respective perspectives, who were great authorities, who kind of dominated the scene. In many cases, it helped that they had longevity. In some cases, they may not have had that kind of time, but still, so it's safer in a way for me also to go back a little bit and pick. I mean, you know, when I first entered the foreign ministry, I started my career in Moscow, and Andrei Gromyko was the foreign minister. When I switched to the after Moscow, I was moved to the Americas division, and the first minister I met then was, at that time, Secretary of State was George Shultz. Now, I saw these people really from the eyes of you know, someone who's you know, starting the business. But when you kind of read about them and you know, analyze them with a passage of time, I mean, so even in our own setup, I would say, I mean, you know, the foreign minister, when I joined the foreign ministry in India, was Atal Bihari Vajpayee. Oh, wow. It's 1977. So, 1977. So, when you look at some of them, you know, different people appeal to you in different ways. You know, Atalji, for example, was always someone who was willing to sort of, in a way, break the mold. You know, and you saw that finally when it came to the nuclear test. So I would say at different points of time, I've had the good, you know, it's like if you are interested in cricket and you've been seeing a lot of test matches, you'd remember great innings. Yeah. You know. By the way, the first century I ever saw was Ian Chappell. Ian Chappell? Yes, in Delhi. Oh. So you remember, you know, you remember these moments, you would remember. I would hesitate to say, okay, this was the all-time greatest. I mean, yeah, that's a tough one, yeah. Yeah. Since you mentioned nuclear and since we're talking about all of these doyens, you've talked about him in the past as well and more recently as well about the legacy of your late father. He's the man who, you know, for all practical purposes was the architect of India's nuclear doctrine. Do you think about your legacy as to how people will remember Dr. S. Jaishankar? No, not really. I mean... how would you want them to remember you if it... I haven't even given thought to that. I mean, look, you know, you start, I guess people start thinking these things when they feel they are very advanced and are close to hanging up their boots. So... You're far from that. Well, you know, I do not know what the future holds. I didn't know what it held 5 years ago. I would have, I mean, my wildest dreams wouldn't have anticipated becoming the External Affairs Minister. But I think I still have enough gas left in the tank not to think about parking in the garage and thinking about how people are living. Please race away Dr. S. Jaishankar. Thank you very much. Ladies and gentlemen, the External Affairs Minister of India, Dr. S. Jaishankar. Thank you so much. Thank you, Mr. Jaishankar. Thank you, Zaka. That was a fascinating discussion. I think his legacy will be
remembered for taking India's foreign policy and diplomacy to great heights under his leadership. Ladies and gentlemen, I request everyone to be kindly seated, and once again I make that request to be seated for all the sessions and not to move out. This is because of the standard security drill. I'd request you to kindly adhere to the security protocol. There's still a lot of people who are standing there. Can I please request each and every one of you to kindly take your seat as we begin the next session? All right. Now, India has also made great strides over the last few years in the economic and foreign policy space, and it's also widely seen as a nation whose time has come. Well, this optimism finds resonance on the playing field as well. In fact, a rising India is riding high on the cricket pitch with both men's and women's team rampant. We are really testing consistent success in various sports, including boxing and badminton. But for a medal-hungry nation of 1.4 billion, there's still plenty to do to emulate the successes of some other nations as well. Ladies and gentlemen, I'd request you once again to be kindly seated before I introduce my next guest. Please put your hands together as I welcome with great pleasure Shri Anurag Thakur, Union Minister for Information and Broadcasting and Youth Affairs and Sports, for our next session titled Gunning for Gold, No Hurdle Too High. This session will be in conversation with my colleague Anand Narasimhan. Welcome, Mr. Anurag Thakur. Let's have a huge round of applause for our next guest. नमस्ते, जय हिंद। अनुराग ठाकुर जी के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज। अनुराग जी, हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? 400 क्या पार होंगे हो। देश ने मन बना लिया 400 पार होकर ही रहेगा, और इसके लिए ख्याल भी अच्छे ही हैं, और समय का इंतजार है, बस वोटिंग शुरू हो जाए, चुनाव कैंपेन शुरू हो जाए। कुछ लोग सर इसे कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस कह रहे हैं। मुझे लगता है जब आपने काम अच्छा किया हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा ही होता है। अगर आपने पहले प्रैक्टिस ना की हो, काम ना किया हो, तो आपका संभव ही नहीं होता। और मुझे लगता है जिसके पास मोदी जी जैसे लोकप्रिय नेता हों, 10 वर्षों की उपलब्धियां हों और 2047 तक का विजन देश के सामने रख के विकसित भारत बनाने का संकल्प हो, जो चुनाव से पहले भी पूरा दिन अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठकर अगले 25 वर्षों में भारत को कहां पहुंचाना है, संकल्प से सिद्धि तक कैसे लेके जाना है, इस सोच को रखता हो तो 400 पार होना जरूरी है। पर एक बात बताइए, इस 400 पार में आरोप ये है कि पहले वॉशिंग मशीन था, अब धोबी घाट हो गया है। बीजेपी और जिस तरीके से जो स्ट्रैटेजी है कि जो भी आए उसको संभालो, अपने साथ करा लो, कल वो करप्ट था, आज नहीं है। देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करते हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़ा करते हैं, जो न्यायिक व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा करते हैं। उनको जो सूट करता है वो वही बोलते हैं। मैं तो यही कहूँगा, अगर किसी के खिलाफ आरोप सिद्ध होते हैं, किसी को कानून सजा देता है, तो उसके खिलाफ जो दंड बनता है उसको देना चाहिए। लेकिन जब तक कुछ नहीं होता तब तक जान चल रही है। पर वो कुछ तब नहीं होता जैसे वो बीजेपी में आ जाते हैं, तब तक होता है जब तक बीजेपी में नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे जहाँ पर समय के साथ साथ, अब कई वर्षों में देखिए, नेशनल हेराल्ड में राहुल गांधी जी और सोनिया जी बेल पर हैं, लेकिन दूसरी ओर मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं। कोई शराब घोटाले में जेल में है, कोई नेशनल हेराल्ड घोटाले पे बेल पे है। लालू यादव जी एक मामले में जेल में जाए, दूसरे मामले में जांच चल रही है। अरविंद केजरीवाल जी 9 सम्मन आने के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं होते, लेकिन राजनीति में आने से पहले बहुत ज्ञान कांग्रेस को बांटते थे, आज उन्हीं के साथ हाथ मिलाकर बैठे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी से इतना प्यार क्यों है? कहीं ना कहीं हर दिन किसी ना किसी बहाने उन्हें समन दिया जा रहा है।
नहीं, बहाने नहीं, कारनामे के कारण दिया जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो झूठ की पराकाष्ठा, उनके झूठ दुनिया में सबसे ज्यादा कोई और सबसे सफाई के साथ बोलने वाला है तो उनका नाम है अरविंद केजरीवाल जी। राजनीति में आने से पहले कहा बेटी की कसम खाता हूं नहीं आऊंगा, फिर कहा बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, फिर कहा सिक्योरिटी नहीं लूंगा। सबसे बड़ी गाड़ी भी ली, 2 राज्यों की सिक्योरिटी भी ली, सबसे बड़ा बंगला भी लिया, शीश महल के रूप में बनाया भी, करोड़ों रुपए खाए भी, और जो कहते थे ईमानदारी के साथ सरकार चलाऊंगा, सबसे भ्रष्ट सरकार चलाने का रिकॉर्ड किसी के नाम पर है तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर है। पंजाब में सरकार बनाते स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा हो गया भ्रष्टाचार के चलते, दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री जेल चला गया भ्रष्टाचार के चलते, और दिल्ली का शराब मंत्री जिसको ईमानदारी का सर्टिफिकेट ये देते थे आज कितने महीनों से जेल में बैठा है, बेल भी नहीं हो पा रही। पर वहाँ ये आरोप है कि क्योंकि दिल्ली में बीजेपी को हराया 2 बार, इसीलिए बीजेपी थोड़ा गरम है, इसीलिए इनके पीछे पड़ी हुई है। चुनाव में हमारा क्या है जी, जनता ने जिता दिया जी, लेकिन बीजेपी हमारे पीछे पड़ी है जी। नहीं, ऐसा ये ईडी के समन तब तक आते रहेंगे जब तक हम बीजेपी का बुलावा स्वीकार नहीं करेंगे। आनंद जी, ऐसा है, चुनाव में हार जीत चलती है, बीजेपी को पहली बार थोड़ी हारी। हम तो उस राजनीतिक दल से हैं कि जब जनसंघ के समय से जी जमानत बच जाती थी, तब जमानत के बचे हुए पैसे से भी हम पार्टी देते थे कि अच्छा जमानत तो बच गई, लेकिन जो विचार हम उस समय लेके चले थे कि धारा 370 हटाएंगे, 35A से मुक्ति दिलाएंगे, जम्मू कश्मीर में परमिट राज को खत्म करेंगे, ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे और CA का कानून लाएंगे। केवल एक दल भारत में ऐसा है जिसने जो कहा वो करके दिखाया है, अपनी विचारधारा से हटके नहीं। हम अपनी विचारधारा से टस से मस नहीं हुए, और इसीलिए जनता ने 2 सीट वाली पार्टी को 282 भी जिताई, 303 सीटें भी जिताई, और अब की बार 400 पार करके भी दिखाएंगे। देखिए, ये जो आप कॉन्फिडेंस कह रहे हैं ना जनता का, दिस इज बीइंग रिप्रेजेंटेड वेरी डिफरेंटली इन द वेस्टर्न मीडिया। Harvard has come out and said कि the coming elections are not a good thing for democracy, it's a worry. Harvard की एक लेटेस्ट स्टडी आई है। VDEM कहता है कि हम एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी हो गए। ये विदेशी मीडिया को आपसे इतना प्रेम क्यों है? मुझे लगता है गुलामी की मानसिकता से हम सबको बाहर निकल जाना चाहिए। आज दुनिया भारत की ओर देख रही है कि भारत ने मापदंड क्या तय कर रहा है। जब कोविड के समय दुनिया के बड़े बड़े देश जो नहीं कर पाए, जो कहते थे यही विदेशी मीडिया कि भारत में करोड़ों लोग मर जाएंगे महामारी और भूखमरी के कारण, आज मैं इस मंच पर कह रहा हूं मोदी का नेतृत्व था, महामारी से भी बचाया, भूखमरी से भी बचाया, 2 वैक्सीन भी बनाई, 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई भी, और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज पिछले 3 साल तो दिया ही, अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी की गारंटी है। उस समय जब दुनिया कहती थी कि यूक्रेन रशिया के युद्ध में भारत को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, हमने गैस भी खरीदा, तेल भी खरीदा। जब दुनिया ने दबाव बनाया तब कहा हमें भारत की ज़रूरत को पहले देखना है, हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी 140 करोड़ लोगों के लिए पहले देखनी है, और भारत ने जो निर्णय लिया हम उस पर खड़े रहे। ये पुराना भारत नहीं, ये नया भारत है, और नए भारत की बुलंद तस्वीर इससे नजर आती है जब 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था से आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनकर खड़ा हुआ। लेकिन जब यही इंटरनेशनल मीडिया फ्रंट पेज पे प्रधानमंत्री के चेहरे के इंटरव्यू को लिखती है या छापती है या कुछ भारत के बारे में अच्छा कहती है, तो फिर आप ही सबसे ज्यादा कहते हैं कि देखिए इसको दिखाइए इंटरनेशनल मीडिया हमारे बारे में क्या कह रही है। अब आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया को मत गिनिए जब वो आपको क्रिटिसाइज करती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सन 2001 में नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। बहुत बड़ी चुनौती थी, उससे पहले भूकंप आया था, आपदा आई थी। गुजरात को वापस खड़ा करने का उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। देश के मीडिया ने न जाने क्या क्या उनके बारे में वर्षों तक लिखा होगा, और देश के विपक्ष ने तो यहाँ तक कि फर्जी मुकदमों से लेके ऐसे ऐसे बयान मोदी जी के बारे में दिए जो हिटिंग बिलो द बेल्ट, राइट, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बिल्कुल। लेकिन किसी ने कितने भी प्रयास किए हों, कितनी भी गाली निकाली हो, नरेंद्र मोदी जी का पर्सनैलिटी ही ऐसी है, उनका काम ही ऐसा है कि वो गाली को भी अपने पक्ष में कैसे लाकर खड़ा कर दिया,
ये मोदी जी ने दिखाया क्योंकि उनका काम बोलता था। किसी ने कहा मौत का सौदागर, किसी ने कहा नीच, किसी ने कहा गंदी नाली का कीड़ा, किसी ने कहा चाय बेचने वाला है, लेकिन देश की जनता समझदार थी जिन्होंने देश बेचने वाली कांग्रेस को नकार दिया, ईमानदार चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री। हमने ईमानदारी के साथ आनंद जी 10 साल सरकार चलाई। 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप नरेंद्र मोदी की सरकार पर नहीं है, ना मोदी जी पर है, न उनके किसी मंत्री के ऊपर है। और हम आगे के लिए भी जनता को विश्वास दिलाते हैं, ईमानदारी के साथ देश को आगे बढ़ाएंगे, 5वें पर नहीं रुकेंगे। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी, यानी कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम भारत को बनाएंगे। लेकिन खेल नैरेटिव्स का भी है अनुराग जी। देखिए, यू आर द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, तो इसलिए मैं वापस आपसे पूछूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय अकेडमियां आज भी भारत को जिस नज़र से देखती है, वहाँ ये कहती है कि मोदी सरकार के अंदर ये एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी हो रही है, यानी कि डेमोक्रेटिक तानाशाही। इस लेवल तक कहा जाता है कि जनता वोट जो भी दे रही है ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूशंस आपने कंट्रोल कर लिए हैं। ईडी आपके इशारे पर समन भेजता है, सीबीआई आपके इशारे पर अरेस्ट करती है, मीडिया तक को गोदी ही कह दिया जाता है। चलो मैं आपसे इसका उत्तर देता हूं। पहली बात तो जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, किसी को भी भ्रष्टाचार के मामले में बुला सकती हैं। दूसरी बात ये कहता हूं, आप में से किसी को ईडी का नोटिस आया? यहां पे सब साफ बैठे हैं, ईमानदार बैठे हैं। अब जिसने गलत काम किया होगा उसको ईडी का नोटिस आएगा। अब हमने वायदा क्या किया था 10 साल पहले? भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। हमने अपनी ओर से भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया। हमने कहा था भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके दिखाएंगे। अब आप तय कर लो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। पर कार्रवाई तो तभी करनी चाहिए अगर वो पाला छोड़ के बीजेपी में आ जाए ना। आनंद जी, अगर ईडी ने कार्रवाई की, सीबीआई ने कार्रवाई की, कोर्ट है कि नहीं है? हाँ। न्यायालय में जब वो जाते हैं, क्या उनको बेल मिल गई? अगर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को बेल मिल जाती तो वो ठीक है। अगर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह या सत्येंद्र जैन को बेल नहीं मिलती तो गलत है। चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा कैसे चलेगा? नहीं, उनको बेल मिल रही है, यहाँ आपको बेल नहीं मिल रही, तो पूछ रहे हैं कि वही वहां मिल रही है, यहाँ क्यों नहीं मिल रही? इतनी किसको नहीं मिल रही? आम आदमी पार्टी को, उनके नेताओं को। भी भ्रष्टाचार किया, सबूत है वहां पे, सारे आरोप हैं। अब ये तो मैं और आप किसी चैनल पे बैठ के तय नहीं कर सकते किसको बेल देनी, किसको नहीं देनी। ये न्यायिक प्रक्रिया है। मुझे तो अपने देश के कानून पे विश्वास है, न्यायालय पे विश्वास है, न्यायपालिका पे विश्वास है। नहीं, ये जो प्रोसेसेस को कंट्रोल करने की बात है, हिमाचल में जो हलचल हुई, अब आप देख रहे हैं 15 महीने में वहाँ सरकार डगमगा रही है। वहाँ भी कहीं ना कहीं दोष बीजेपी को दिया जा रहा है कि भाई हमें नहीं चुना तो तुम्हारी सरकार भी नहीं चलने देंगे। घर आपसे ना संभल पाए, आरोप पर हम पे लगाए। पिछले 9 महीनों से उनके विधायक एक के बाद दूसरा आरोप लगाता था कि मुख्यमंत्री सुनता नहीं है, जो वायदे किए वो पूरे होते नहीं हैं, उनके काम अपनी सरकार में होते नहीं थे, सरकार में अहंकार घमंड पूरा भरा हुआ था। और ये सरकार बनने के पहले दिन मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 97% हिंदू जहां रहते हैं, हिंदुओं को हराकर ये सरकार बनाई है। ये घमंड और अहंकार था। फिर जो वायदे किए थे कि 1500 रुपये नारी शक्ति को देंगे, वो 1500 रुपया महीना नहीं दिया, 15 महीने बीत गए। वो 24 लाख महिलाएं प्रदेश की पूछती कि 1500 रुपया महीना कहाँ है। 5 लाख युवाओं को कहा था सरकारी नौकरी देंगे, नहीं दी। वो पूछते हैं सरकारी नौकरी कहाँ है। इन्होंने कहा था 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं दिया। 600 करोड़ रुपया स्टार्टअप फंड के लिए देना था, नहीं दिया। इन्होंने कहा था बागवानों को उचित दाम देंगे, मुंह मांगे दाम देंगे, नहीं दिए। यहाँ तक कि सेब और फल और उनको नदी और नालों में बहाने की नौबत आ गई। अब ये सरकार का दुखड़ा और रोना, ये दुख भरी दास्तान मैं आपको क्या सुनाऊं। ये सुख की सरकार नहीं, ये दुख भरी दास्तान थी इनकी। पर आपने कहा कि कांग्रेस ने कोई बातें पूरे नहीं किए, लेकिन जनता ने वोट तो कांग्रेस को दिया, बीजेपी को नहीं दिया था। 6 विधायक गए हैं। ऐसा तो नहीं कि पूरी की पूरी सरकार वहां पर रिवोल्ट हो गई। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी जहां पर भी स्थिर नहीं है या आउट हो जा रही है, आज की तारीख में वो ऐसा कर रही है कि वहां की लोकल सरकारों को अस्थिर कर रही है। ये आरोप सही है कि गलत है? देखिए, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आखिरकार हमने क्या कहा? हमने तो कुछ नहीं कहा। अगर सरकार में इतना दम होता, उनको लगता कि उनके पास मेजॉरिटी है,
तो क्यों नहीं वोट करवाया? क्यों आनंद फानंद में फाइनेंस बिल पास करवा दिया? क्यों हाउस एडजॉर्न कर दिया? क्यों नहीं वोटिंग तक लेकर गए? कांग्रेस को उस समय भी लगता था कि उनकी सरकार अल्पमत में आ गई है, अपना चेहरा बचाने के लिए किया है, और स्पीकर ने जिस तरह से उनको सस्पेंड किया वो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उसके ऊपर खड़ा करता है। लेकिन अब जनता के बीच में जाएंगे, 6 की 6 सीटें वो भी जीतेंगे, और लोकसभा की सीटें जीतकर भी, हमने पहले भी 4 की 4 जिताई थी, अब की बार फिर चारों की चारों हिमाचल से भी जिताएंगे और देश में 400 पार करके भी दिखाएंगे। हिमाचल की हलचल की बात कर रहे हैं तो विक्रमादित्य जी की बात याद आई मुझे कि वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में गए थे। बीजेपी के बहुत सारे नेताओं को किसी को भी न्योता नहीं मिला, सबको कहा गया आप बाद में जाइए। जिनको न्योता मिला आधे से ज्यादा ने जाने से मना कर दिया राजनीतिक पार्टियों में से। विक्रमादित्य जी वहां गए, वैसे ही हलचल शुरू हो गई कि हिमाचल में कुछ होने वाला है। ऐसा क्यों है? क्या कोई बीजेपी में ना होकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा सकता था? इस पे मुझे लगता है जितनी राजनीति जितने हल्के स्तर तक लोगों ने की है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता नहीं दुनिया का कोई ऐसा देश होगा जहां पर जो बहुसंख्यक होंगे उनको 500 वर्ष तक अपने ही देश में इंतजार करना पड़ा हो। रामलला की जन्मभूमि पे भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए 150 साल तक मुकदमा लड़ना पड़ा हो, लेकिन हमने इंतज़ार भी किया, मुकदमे भी लड़े, और जो कहा था वो करके भी दिखाया। रामलला की जन्मभूमि पे भव्य राम मंदिर बनाकर भी दिखाया है, प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई। हमने निमंत्रण सबको दिया। बहुत सारे लोग चुनावी राजनीति के चक्कर में नहीं आना चाहते थे, बहुत लोगों ने मुंह फेर लिया, लेकिन कुछ लोग आए। मैं स्वागत करता हूं अगर वो आए हैं। मुझे लगता है इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए, इसको आस्था के रूप पर से। राजनीतिक रूप से ही देखा जा रहा है। बीजेपी पर आरोप है कि पहले राम की राजनीति की, सरकार बनाया, बहुमत बना, पार्टी ग्रो हुई, अब मंदिर बन गया तो मंदिर की भी राजनीति कर रहे हैं। नहीं, हमारे लिए मंदिर की राजनीति करने की आवश्यकता नहीं। हमने हर बार अपने संकल्प पत्र में लिखा कि 370 भी हटाएंगे, 35 से भी, ट्रिपल तलाक भी कहा, भव्य राम मंदिर के निर्माण की बात भी हमने कही। जब हम नहीं बना पाते थे, पूर्ण बहुमत नहीं मिलता था, कोर्ट का निर्णय नहीं आता था, तब तो आप जैसे बड़े पत्रकार हमसे भी पूछते थे, क्योंकि विपक्ष के लोग कहते थे कि बीजेपी वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो तब तो आप तारीख पूछते थे। अब हमने तारीख भी दे दी, निमंत्रण भी दे दिया, तब क्या हुआ? तब कहा गया कि बीजेपी से पॉलिटिसाइज कर रही है, इसको पॉलिटिकल इवेंट बना दिया है। हमने केवल एक मंदिर नहीं, भव्य और दिव्य सोमनाथ धाम भी बनाया, भव्य और दिव्य केदारनाथ धाम भी बनाया, भव्य और दिव्य काशी विश्वनाथ धाम भी, और भव्य और दिव्य महाकाल लोक भी, और अब भव्य और दिव्य अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी करवाया है। ये आस्था के केंद्र है, ये आस्था के केंद्र है। लेकिन अब आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे अच्छा बनाने के साथ यहाँ पे अर्थव्यवस्था के केंद्र भी बने, रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिले। तो मुझे लगता है अगर आप बौद्ध सर्किट देखोगे, बुद्ध सर्किट को देखोगे, करतारपुर कॉरिडोर को देखोगे, हेमकुंड साहब तक रोपवे को देखोगे, ये सब किसने किए? मोदी जी ने किए। आजादी के समय पंडित नेहरू जी ने निर्णय नहीं कर पाए, करतारपुर कॉरिडोर नहीं था उस समय करतारपुर। अब पंजाब में से दूरबीन लगा के हमारे सिख भाई गुरुद्वारा साहब के दर्शन वहां पे करते थे। ये मोदी सरकार को 70 साल के बाद निर्णय लेना पड़ा, तब जाके करतारपुर कॉरिडोर बना। हेमकुंड साहब का कभी जाके देखिए, हमारे भाई यहाँ पर बैठे हैं, सच पूछिए कितनी कठिन यात्रा है वहां के लिए, लेकिन रोपवे से उसको आसान बना दिया गया। इसी तरह से बाकी जगह के लिए भी जब इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बन रहा है, फर्क कहाँ पड़ता है आनंद जी? केवल आप देखिए, आज मंदिर की बात करते हैं, मंदिर बनाया, लेकिन आप ये मुझसे क्यों नहीं पूछते कि अच्छा पहले एयरपोर्ट कितने थे, आज एयरपोर्ट कितने, पहले मेडिकल कॉलेज कितने थे? लेकिन मैं आपके सामने देश को बताना चाहता हूँ, सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे 2014 में, आज 150 एयरपोर्ट हैं। केवल 384 मेडिकल कॉलेज थे, आज 710 मेडिकल कॉलेज हैं। केवल 500 यूनिवर्सिटीज थी, आज 1100 यूनिवर्सिटीज हैं। केवल 16 IIT थे, आज 23 IIT थे। कल 12 IIM थे, आज 19 IIM हैं। हमारे यहाँ पर केवल 5 शहर मेट्रो से जुड़े थे, आज 20 शहर मेट्रो से जुड़े हैं।
पहले 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे हैं। पहले 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज 6,75,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं, जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, हमने 10 साल में करने का काम किया है। आप पूछिए ना मुझसे विकास की बात, इनके समय 10 साल में 10वें नंबर पे अर्थव्यवस्था खड़ी रही, हम 5वें नंबर पे लाए हैं। इनका कालखंड पूरा 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ गेल घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, कोयला घोटाला, घोटाले पे घोटाला था। अब हमने घोटालों की जांच की शुरू की तो आप मुझसे जांच से बाहर नहीं आ रहे हैं। यह फर्क है दो सरकारों का। इनके समय कोई बड़ा आयोजन नहीं होता था, कोई बड़ा अलायंस नहीं होता था। टुडे आई कैन से मोदी इज अ मैन ऑफ अलायंसेस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात करें, हमारे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करें, योग और आयुर्वेद को जो दुनिया के स्तर पे लेकर गए, वैश्विक पहचान दिलाई, वो कौन आज से पहले कर पाया था? कोई नहीं। हमने G20 की अध्यक्षता की, हो सकता था दिल्ली में ही करते, देश के 60 शहरों के 200 स्थानों में की। भारत की कला, संस्कृति, अपनी परंपराओं को दिखाने का काम दुनिया को किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। वो खड़े हो सकते थे, बैकड्रॉप पे कुछ भी हो सकता था, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ हमारे हजारों वर्ष के इतिहास को दिखाने का काम किया, व्हील्स ऑन टेम्पल का दिखाकर जी हमारे हजारों साल की संस्कृति को दिखाने का काम किया। जिस टेबल पे हम बैठे थे, जिस पे मैं बैठा था, वो तो बालाघाट लिखा था। अब आधों को पता नहीं होगा बालाघाट है कहाँ पे, लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे जहाँ पे नक्सलवादी इलाका है, उसको भी वहाँ पे रखा, लेकिन उसकी और क्या विशेषताएं। ये नरेंद्र मोदी जी जिस तक जहाँ तक सोचते हैं, जो आपका मीडिया का सेंटर बना था, कोई हिमालयन रेंज को दिखाया था, अलग अलग पर्वत थे, अलग अलग नदियों के नाम पे रखा था। कौन सोचता था ऐसे? कोई नहीं। ये व्यक्ति बिल्कुल अलग सोचते हैं। नेतृत्व ऐसा है जो देश की कला, संस्कृति, परंपराएं, इनको भी तो बचाते ही हैं, लेकिन आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी का उपयोग होकर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी कैसे आ सकती है, ये पारदर्शिता हमारी सरकार में जवाबदेही देखी गई। जब हमने जनधन आधार मोबाइल को लाए, डीबीटी करके दिखाया, तो आज 43 करोड़ बैंक खाते भी खोले तो उसमें सीधा पैसा भी भेजते हैं। अगर 34 करोड़ मुद्रा लोन मिले, 27 लाख करोड़ रुपया बगैर गारंटी के गरीब व्यक्ति को मिला, तो वहीं पे 80 लाख स्वनिधि योजना का ऋण हमारे रेडी फड़ी वालों को मिला, जो लाखों करोड़ रुपया क्यों मिला? इसलिए मिला कि अपना रोजगार स्वरोजगार खड़ा कर सके। आज वो अर्थव्यवस्था को एक अपना योगदान दे पाते हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कहने के लिए आपके लिए एक योजना होगी, लेकिन वोकल फॉर लोकल पर जब मोदी जी ने पिछले हमारे फेस्टिवल सीजन में कहा कि लोकल को खरीदिए, 4 लाख करोड़ रुपए की सेल हुई। ये आप कल्पना भी नहीं पहले कर सकते थे। आज देश का प्रधानमंत्री कहता है तो लोग उस दिशा में काम करते हैं। ये बदलाव है आज देश में। लेकिन अगर आप ये सब कह रहे हैं तो कहा जा रहा है कि एक शक्ति है, इसको नष्ट करना है। ये शक्ति कौन है? अब शक्ति की बात आई है तो हम तो हर नारी में शक्ति देखते हैं, हर महिला में, हर बेटी में, हर बहन में शक्ति देखते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, सनातन की भक्ति ही शक्ति में है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सनातन को कुचलना चाहते हैं, कुछ लोग हैं वो शक्ति से लड़ना चाहते हैं। लोग तो शक्ति की पूजा करते हैं लड़ने के लिए, लेकिन कुछ लोग शक्ति के खिलाफ भी लड़ना चाहते हैं। ये कुछ लोगों का मानसिक दिवालियापन हो सकता है, लेकिन इनकी सोच जैसी भी हो, सनातन को कुचलने की हो, हिंदू को खत्म करने की हो, शक्ति के साथ भिड़ने की हो, ना सनातन को कुचल पाया है, ना कोई सनातन को कुचल पाएगा, ना शक्ति को कोई दबा पाया है, ना शक्ति को कोई दबा पाएगा। पर अगर इसे ऐसा देखा जाए कि एक शक्ति है जो सनातन का प्रयोग कर कर और ज़्यादा ताकतवर बनने की कोशिश कर रही है, शक्तिमान होने की कोशिश कर रही है, ये वो शक्ति है जो मनुवाद की प्रचारक है। ये वो शक्ति है जो इस देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाना चाहती है कि मेरी ही चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। ये आरोप है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अब इसमें तो शक्ति के रूप में मैंने पहले भी कहा, सनातनी के लिए तो शक्ति में ही भक्ति हमारी जो है वो शक्ति के रूप में ही करते।
अब कुछ लोग हैं जो इस सोच के साथ चले, अब उनके बारे में मैं कितनी टिप्पणी करूंगा। पहले उनके कुछ गुर्गे थे जी। गुर्गे मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि पहले अलायंस पार्टनर्स के थ्रू एक राज्य से शुरू हुआ जी। वो कहते थे हम सनातन को कुचल देंगे। हाँ। कोई कहते थे राम मंदिर के हाँ। राम मंदिर के पूरे भव्य निर्माण के बाद जब नरेंद्र मोदी जी अयोध्या धाम गए तो एक राज्य ऐसा भी है जिसने दक्षिण भारत के मंदिरों में उसके लाइव प्रसारण को बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देना पड़ा। क्या आज हमें भारत में अपने मंदिर में आस्था के केंद्रों पर इस तरह से कोई राज्य की सरकार करे तो क्या उचित है? और उनके ही नेता मुख्यमंत्री के पुत्र कहते सनातन को जड़ से खत्म कर देंगे, गंदी गंदी बीमारियों के साथ उसको जोड़ के देखते हैं। ये क्या सोच है? और राहुल गांधी जी चुप बैठते हैं। फिर उनके दूसरे मंत्री जो घोटाले में 2G में उनका नाम आया था वो बोलते हैं। इसके बाद इनके मुख्यमंत्री पहले हिमाचल प्रदेश के बोलते हैं कि हम तो हिंदुओं को हरा कर आए हैं। फिर संदेश खली में शक्ति को कुचलने का, अपमानित करने का काम एक महिला मुख्यमंत्री के नाक तले होता है और संरक्षण उस नेता को देती है जो उसके पार्टी से सीधा जुड़ा है। संदेश खली का संदेश आज देश की गली गली तक गया है, लेकिन संदेश ये गया है कि एक महिला मुख्यमंत्री भी महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पाई। उसके रहते उनकी अस्मिता लुटी, उनके घर बार लुटे, उनके साथ जो खिलवाड़ किया गया। अगर देश का मीडिया नहीं जागा होता, हमने आंदोलन नहीं किए होते, भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर ना निकली होती, तो ममता जी की नाक के तले संदेश खली में खेल होता। अनुराग जी, आरोप यह है कि संदेश खली तो एक छोटा एक टापू है और जहां पर यह प्रताड़ना कई सालों से चल रही है। उसके बगल में सोना खाली था। बीजेपी ने विषय तब उठाया जब चुनाव सर पर आए थे। आपने मंदिरों की बात की, सनातन धर्म की बात की। कर्नाटक में यही HRNC एक्ट चल रहा है जिसमें बीजेपी के शासन में भी चल रहा था। 4 धाम जब प्रोजेक्ट आया था वो इलेक्शन से पहले उसको सरकार ने कहा कि हम अपना हाथ पीछे हटा रहे हैं, हम वापस उसको दे रहे हैं। तो ये जो मंदिरों का कंट्रोल है, जब बीजेपी की सरकार है तो सही है, लेकिन दूसरी सरकारें हैं तो गलत है। नहीं, देखिए मैं आपको बड़ा स्पष्ट थोड़ा वॉक द टॉक। आपने तो वही कह दिया जो खड़गे जी कह के गए थे किसी मंच पे। उन्होंने कहा हाँ ये तो वर्षों से चलता था। तो क्या करें, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होने दें? नहीं, अगर आप इससे सहमत हैं नहीं, तो मैं, तो मैं बड़ी चिंता का विषय है। आरोप आप पर अगर आप खड़गे जी के साथ सहमत हैं कि शक्ति के खिलाफ ऐसा होता है महिलाओं के खिलाफ। मेरा तो एक ही है मत सर, लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, मैं यहाँ जो तिरंगा है इसी के साथ हूँ, इस भारत के साथ हूँ। लेकिन प्रश्न ये है कि वहां जो हो रहा था वो तो आपने चुनाव से 60 दिन पहले उसे उठाया। जब बीजेपी की सरकार कर्नाटक में थी तब कर्नाटक के मंदिरों पर से फिर से वही वसूली, वही टैक्स होती थी जिसको कि आज बीजेपी विपक्ष में रहकर जजिया कह रही है। मैं आपको बहुत क्लियर करके कह रहा हूं। पहले तो संदेश खली पे आता हूं जहां पे आपने महिला शक्ति की बात की। देखिए अंतर क्या है, एक तरफ वो सरकार है जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होता आंखें मूंद करके बैठी, दूसरी ओर हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो नारी शक्ति बंधन बिल लाके 33% आरक्षण विधानसभा से लेके लोकसभा तक सुनिश्चित करती है। बाकी लोग लॉलीपॉप दे रहे थे, नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण देने का काम किया है। लेकिन 33% टिकटें बीजेपी ने अभी तक नहीं दी। हमने लटकाया चुनाव में क्या 33% महिलाओं को टिकटें बीजेपी ने लोकसभा के लिए अभी तक पूरा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कहां है? लटकाना, भटकाना, अटकाना ये कांग्रेस का काम था। हमारा पहला राजनीतिक दल है जिसने अपनी पार्टी में आरक्षण दिया है महिलाओं को, ऑफिस बेरर में भी और पूरी बॉडी में भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया। हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी महिला मोर्चा की अध्यक्ष उसका सदस्य रहती है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में भी उसका सदस्य रहती है। इसके साथ साथ अगर मोदी सरकार में अगर आप मंत्रिमंडल में देखेंगे जहां ओबीसी की रिकॉर्ड रिप्रेजेंटेशन है वहीं महिलाओं की भी रिकॉर्ड रिप्रेजेंटेशन है। अब मैं वापस आता हूं कि मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए क्या किया। सबसे बड़ी बात है, महिला की दिनचर्या में पहला क्या काम? शौचालय नहीं था, गैस सिलेंडर नहीं था, पानी नहीं था, दवाई नहीं थी, अनाज की कमी थी। अब 10 साल में क्या हुआ? 10 साल में 12 करोड़ शौचालय बना कर दिए हैं, 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया है, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त में दिया, 5 लाख की दवाई मुफ्त में दिलाई और अनाज की कमी को भी पूरा किया जब अनाज मुफ्त में देने की गारंटी पहले भी दी
और अगले 5 साल की गारंटी भी दे दी। अब उस महिला के जीवन में शौचालय जाने से लेके पानी भरने को भी छोड़ के, अब अपने घर पे पानी आता है, गैस सिलेंडर वहीं पे ही है, पक्का मकान भी वहां पे दे दिया है। ये पहले नहीं आना था आनंद जी। महिला को स्वाभिमान के साथ जीना, उसको मान सम्मान देना, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आम महिला को, करोड़ों महिलाओं को, तो वहीं पर उनको राजनीति में भी देना आरक्षण, वो भी किया। रिपब्लिक डे परेड को आप में से कितने लोगों ने पिछली बार देखा होगा? आप लास्ट 2 रिपब्लिक डे परेड देखिए। पिछले साल की जब थी तब इजिप्ट के राष्ट्रपति आए तो उन्होंने, प्रेसिडेंट सीसी ने कहा प्रधानमंत्री को कि आपके कर्तव्य पथ को देख के मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया तो वुमेन डेवलपमेंट की बात करती है, यहां वुमेन लेड डेवलपमेंट है, महिला नेतृत्व विकास है। और इस बार तो पूरे कर्तव्य पथ पे अगर किसी ने लीड किया है और समर्पित किसी को रिपब्लिक डे परेड थी तो नारी शक्ति को थी। ये मोदी सरकार में ही संभव हो सकता है। अनुराग जी, आज दुनिया में अगर 1000 एयरक्राफ्ट का हमने ऑर्डर दिया है तो केवल एयरक्राफ्ट के ऑर्डर को मत देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा वुमेन पायलट्स किसी देश में तो भारत में है। ये भारत में ही संभव है। मैं ये भी कह रहा हूं कि रिपब्लिक डे पर जो किया गया सराहनीय है, लेकिन इसे ऑप्टिक्स कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि आप ऑपर्चून मोमेंट पे इसको करके इसको पैकेजिंग फैंटास्टिक कर रहे हैं, ग्राउंड पर रियलिटी कुछ और है। यही आरोप है। आरोप यह है कि इंफॉर्मेशन बहुत कुछ है बट कई सारा जो है ड्रेस्ड अप है मिस इन्फॉर्मेशन। देखिए, आंकड़ों को ना आप झुठला सकते ना मैं। अब कांग्रेस वो है जो 60 साल तक कहते रही गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीब मिट गया लेकिन गरीबी नहीं हटी थी। लेकिन मोदी सरकार के 10 साल में मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी में, यानी कि अति गरीबी रेखा वालों में से 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का अभूतपूर्व कार्य किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। अगर आप उसको भी झुटलाएंगे, अब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी कहती है, नीति आयोग भी कहता है, बाकी एजेंसीज भी कहती है, तो मैं आपको और कैसे विश्वास दिलाऊं? नहीं, पर अगर 4 करोड़ पक्के मकान हम बनाकर देते हैं जी तो ये तो कोई झूठ नहीं है। 3 करोड़ बहनों के नाम पर रजिस्ट्री हुई, ये शौचालय आपके साथ बने, डीबीटी करके 31,000 करोड़ रुपया बहनों के खाते में, 20 करोड़ महिलाओं के खाते में मदद के रूप में डाला गया, कोविड के समय डाला गया। अब ये आंकड़े नहीं, तो एंट्रीज हैं। ठीक है, आप जो कह रहे हैं आपकी बात अब जनता मानती कि नहीं, जनता को डिसाइड करने दीजिए। अब सीए के नोटिफिकेशन को देखिए, जो एक्ट था सीए अमेंडमेंट एक्ट 2019, अमित शाह जी आने वाले हैं और ये नोटिफिकेशन और इस एक्ट को लाने का काम भी आपकी सरकार ने किया, श्रेय आपको जाता है। 2020 में एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में, श्रेय आपको जाता है। लेकिन इसकी रूल्स की नोटिफिकेशन 5 साल बाद, करीब 4.5 साल बाद अभी आई है, तो वो भी चुनाव से ठीक पहले। तो फिर ये प्रश्न तो पूछा ही जाएगा कि भाई आप सब कुछ चुनाव के आसपास ही टाइम कर रहे हैं इसको। आनंद जी, 2019 के चुनाव जीतने के बाद पहला पार्लियामेंट का सेशन आया जुलाई अगस्त का, हमने अनुच्छेद 370 35 से आर्टिकल 370 35A इसको हटा दिया, ट्रिपल तलाक पे कानून ले आए, सीए पे ले आए। तो आप लोग तब सवाल पूछते थे मोदी सरकार को जल्दी क्या है, 5 साल पड़े हैं, 6 महीने में क्यों पूरा कर रहे हो? तब आपका ये सवाल था। फिर आप पिछले 5 साल पूछते थे सीए लाए क्यों नहीं, अब ले आए और नियम भी ले आए, तो अब आप पूछते हो नियम क्यों ले आए? भाई, जो लोग 50-50 साल से अपनी नागरिकता का इंतजार कर रहे हैं, जिनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटने का काम किया गया होगा, जिनको धर्म बदलने पर मजबूर किया गया होगा, जिनकी 14 साल की बेटी को उठा के निकाह पढ़ने के लिए मजबूर किया होगा, उसको जब न्याय कोई नहीं दिला पाया तो नरेंद्र मोदी ने यहां पर न्याय दिलाने का काम किया है। अरे हमने तो अपने 5 साल में किया है। कांग्रेस ने जो 50 साल पहले सिंचाई योजना शुरू की थी, पुल बनाना शुरू किया था, वो भी पूरा नहीं किया, वो भी मोदी सरकार ने पूरा किया है। पुल से लेके, सड़कों से लेके बाकी काम हमने पूरे किए। ये तो कानून के नियम थे, अब लागू भी हम ही कर रहे हैं। नागरिकता उनको मिल रही है जिनको अपना देश छोड़ के, गारंटी किसने दी थी? नेहरू जी ने, कि उनको उसी देश में रह के संरक्षण मिलेगा। अल्पसंख्यक हैं, 23% हिंदू थे, आज 2% रह गए हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। क्यों? अफगानिस्तान में तालिबान आया, पूछिए क्या हुआ? गुरुद्वारा साहब पर, गुरु ग्रंथ साहब पर क्या क्या नहीं। मोदी सरकार ने 3 बार प्राइवेट चार्टर जहाजों को भेज के, प्राइवेट जहाज भेज के, प्राइवेट मींस की सरकारी जहाज भेज के 3 बार गुरु ग्रंथ साहब को भी लाए, सैकड़ों सिख परिवारों को भी लाए, एक की भी जान नहीं जाने दी।
ये जो आप तिरंगा दिल पर यहाँ पे लगा के बैठे ना साहब, हम सबके दिलो दिमाग पे तिरंगा है। लेकिन कांग्रेस की सरकार के समय जब मैं तिरंगा यात्रा कलकत्ता से कश्मीर तक लेकर गया, इसी आर्टिकल 370 35A के खिलाफ, मुझे लाल चौक पर तिरंगा झंडा नहीं फहराने दिया, जेल में डाल दिया गया। आज मेरे से ज्यादा खुश नसीब कौन होगा जब लाल चौक पर 24 घंटे तिरंगा झंडा लहराता है, तिरंगे की रोशनी में लहराता है। हमारी पार्टी की 3 पीढ़ियों ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया, फिर मुरली मनोहर जोशी जी और मोदी जी 1992 में गए, 2011 में मैं गया। 3 पीढ़ियां किसकी पार्टी ने किया होगा? ये केवल हमारी पार्टी है जो उस मुद्दे को लेकर तब तक चली जब तक 370 धारा को खत्म नहीं कर दिया गया। तिरंगे की बात मैं यहां तक करना चाहता हूं, विदेश में बैठे लोग आज इसलिए गर्व के साथ तिरंगा उठाते हैं, इंडियन पासपोर्ट को आप लोग बाहर जाके दिखाते हैं, क्योंकि ऑपरेशन गंगा की सफलता 27,000 भारत के विद्यार्थी और नागरिकों को ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन की युद्ध भूमि से कोई निकाल कर लाया तो नरेंद्र मोदी जी के कारण संभव हो पाया है। अफगानिस्तान से, नेपाल से, सीरिया से, लीबिया से ये तब संभव हो पाया अलग अलग ऑपरेशंस के माध्यम से। और कोविड के टाइम पे तो लाखों भारतीयों को स्वदेश सुरक्षित वापस लाए, ये संभव नहीं था जी। आज हर भारतीय की जान उसका महत्व है, ये पहले नहीं होता था। ये मोदी है तो मुमकिन है, और आज तिरंगे का ही समय है जी, यही समय है, सही समय है। मोदी सरकार का तीसरी बार आने का भी यही समय है। यही समय है, सही समय, मोदी सरकार का यही समय है, आप कह रहे हैं। चलिए जल्दी से कुछ मैं स्पोर्ट्स पे भी आपसे पूछना चाहता था। भारत ओलंपिक्स होस्ट कर रहा है। देखिए, पहला तो मेरा गिला आपसे है कि स्पोर्ट्स को जो प्राथमिकता समाज ने अब पहले से ज़्यादा दी, लेकिन आपके सेशन में सबसे एंड में फिर लाए। हम सबको स्पोर्ट्स को सबसे आगे रख के चलना है। इट्स अ सॉफ्ट पावर जी। और देखिए, हमने टोक्यो ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स में, डेफ ओलंपिक्स में आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल जीते। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में हमने सबसे ज़्यादा मेडल आज तक के जीते। और जब हम बीच स्पोर्ट्स भी अब स्टार्ट किया, और जब हम एशियन गेम्स में गए तो पिछली बार 64 मेडल थे, लेकिन इस बार क्रिकेट में तो सेंचुरी हम लगाते ही हैं। एशियन गेम्स में 107 मेडल जीतने का काम भारत ने किया, जो आज तक के सबसे ज़्यादा है। लेकिन आपका सवाल मुझे पता है किस दिशा की ओर है। जी हाँ, मोदी जी ने बहुत क्लियर कर दिया है। और जब आईओसी का सेशन था तब नरेंद्र मोदी जी ने कहा भारत ओलंपिक्स के आयोजन के लिए तैयार है। 2030 में यूथ ओलंपिक्स, 2036 में समर ओलंपिक्स, जैसे ही बिड शुरू होगी भारत होस्ट करने के लिए तैयार है। अगर हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे तो हमारे में दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति भी यहां पर है। हमसे बड़ी मार्केट जी आने वाले समय में कोई नहीं होगी खेलों के विस्तार के लिए। तो जी हां, 2030 का यूथ ओलंपिक्स, 2036 का समर ओलंपिक्स भारत आयोजन करने के लिए तैयार है। चलिए लास्ट के 1.25 मिनट बचे हैं, तो जल्दी से मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। ये रैपिड फायर की तरह आप इसे ले लीजिए। अगर आप नेता नहीं होते तो क्या होते? क्रिकेटर। टेरिटोरियल आर्मी आपने छोड़ दिया, पर क्रिकेटर होते, ठीक है। घर में टेरिटोरियल आर्मी में तो अभी भी हूं, अभी भी आई एम अ सर्विंग कैप्टन इन द टेरिटोरियल आर्मी। करेक्ट। तो फौजी भी है, नेता भी है, कॉम्बिनेशन, और क्रिकेटर भी है। धर्मशाला में मीडिया का मैच कब करा रहे हैं सर? वादा कर रहे हैं, कराए नहीं? मुझसे कहा, पूछिए। मेरा बस चले तो मैं तो चुनाव प्रचार के दौरान ही करवा दूं, क्योंकि जब इंग्लैंड की टीम भी आई तो उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे खूबसूरत मैदान कहीं पर है तो धर्मशाला में। आनंद जी, इसको मैं 1 मिनट और लेके, इसलिए आधा मिनट में बोल देता हूं। पहली बार हुआ होगा कि यूके से लगभग 4,000 लोग फ्लाई करके केवल धर्मशाला का मैच देखने आए। ये अपने आप में लोकल इकोनॉमी और खेल के लिए बहुत बड़ी बात है। एक भूल जो आप सुधारना चाहेंगे? पहले भूल करना ही नहीं चाहूंगा तो सुधारने की तो दूर की बात। हिमाचल प्रदेश या हिंदुस्तान? हिमाचल प्रदेश या हिंदुस्तान, यानी कि स्टेट लेवल पॉलिटिक्स या नेशनल लेवल पॉलिटिक्स? दिल में है हिंदुस्तान, लेकिन जमीन है हिमाचल में, तो जमीन बचा के रखनी और देश के लिए काम करना हिंदुस्तान के। लेडीज एंड जेंटलमैन, अनुराग ठाकुर। Big round of applause for him, please. Thank you.
2019, the world's largest democracy went to polls. As millions cast their votes, there emerged one undisputed winner. News18 Network. On election result day, our news network had the highest cumulative reach. भारत के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क के तौर पर हमें एक निर्णायक